उपस्थित हैं प्रमोशन से जुड़ी सारी गतिविधियों को साझा करने के लिए। SSLV-D2 का प्रमोशन आज 10 फरवरी 2023 को सुबह 9:18 पर श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से किया जाएगा। इस मिशन में मुख्य उपग्रह EOS-07 के साथ साथी उपग्रह हैं जानस-1 तथा आजादी सैट। प्रमोशन की उल्टी गिनती 6.5 घंटे पहले शुरू हो चुकी है और सभी गतिविधियां अपेक्षित तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। अब हम प्रमोशन से 32 मिनट की दूरी पर हैं। Namaskar, a very good morning to the viewers. As we gear up for the first launch of the year 2023, you are watching this telecast live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, the only spaceport of India. I am Madhuri, bringing to you the commentary in English along with my co-commentator, Mr. Vikas Swarnkar. Roger. The SSLV-D2 EOS-07 mission will take place today, the 10th of February 2023 at 9:18 hours Indian Standard Time from the first launch pad. Noted. This telecast is being brought to you by Doordarshan. Also, the live coverage is available on ISRO website, YouTube, Facebook, and Twitter. This mission intends to place the prime satellite EOS-07 weighing about 150 kg into 450 kilometers orbit with 37.2 degrees inclination. Apart from EOS-07, there are two co-passenger satellites, Janus-1 from USA and Azadi-Sat-2. The nominal duration for SSLV-D2 EOS-07 mission is 900 seconds. SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक लघु उपग्रह प्रमोचक यान है। यह इसका दूसरा प्रमोशन होगा। इससे पहले SSLV-D1 का प्रमोशन 7 अगस्त 2022 को 9:18 पर श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से ही किया गया था। इस मिशन में सभी तंत्र उद्दिष्ट कार्य किए, लेकिन अंतिम क्षणों में द्वितीय चरण के वियोजन के दौरान अपेक्षा से अधिक आवेग की वजह से सेंसर की त्रुटि समझ ऑनबोर्ड कंप्यूटर ने सैल्वेज पाथ में यानी बचाव पथ में जाने का निर्णय लिया और इस तरह मिशन अपनी उद्दिष्ट कक्षा में जाने में असफल रहा था। हम देखते हैं कि अंतरिक्ष प्रयोग कितनी अचूक होने चाहिए। एक छोटी सी त्रुटि भी मिशन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, लेकिन इसी से इसरो के वैज्ञानिक अभियंता इसे चुनौती की तरह लेते हैं और अध्ययन तथा परिश्रम के लिए और साहस जुटाते हैं। सारे आंकड़ों को पूर्ण अध्ययन के पश्चात इस रॉकेट SSLV-D2 को कुछ संरचनात्मक तथा लॉजिकल बदलाव किए गए हैं। फिर कई परीक्षणों तथा समीक्षाओं के पश्चात आज SSLV-D2 के प्रमोशन के लिए हम पुनः तैयार हैं इस मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। Today's launch is the second developmental flight of SSLV after the maiden launch on 7th of August 2022. The previous launch of SSLV-D1 and the placement of satellite EOS-02 in highly elliptical unstable orbit. The corrective measures implemented in SSLV-D2 include the change of separation system for second stage separation that has proven to generate lesser shock and certain logics of programming. Now you are about to watch the integration film for the launch vehicle integration here at Sriharikota. P4 MOTR, mobile MOTR, short radiation. The nozzle end segment being flagged off from the assembly building to the first launch pad. Movement of rocket segments is a critical activity keeping vibrations in strict control. P3 pulsar on. यह प्रथम चरण SSLV-D2 का इसे एकीकृत कर लॉन्च पैड लाया गया है तथा दूसरे खंड इसे मिडिल सेगमेंट कहा जाता है। यह मिडिल सेगमेंट है प्रथम चरण का।
अब इसे एकीकृत किया जा रहा है। इसके बाद में हेड एंड सेगमेंट, ये सबसे ऊपरी खंड है SS1 चरण का। The three segments of SS1 being assembled one on top of the other, and then the igniter for SS1. The carbon fiber case cast with propellant, that is the SS2, in respective interstages, assembled in a separate assembly facility. यह द्वितीय चरण है, यह भी ठोस नोजल पर आधारित चरण है। Roger. इसे भी पूर्ण परीक्षित किया जा रहा है। यह वेंटेड इंटरस्टेज आप देख Roger. रहे हैं। This stage is one of the legendary inheritance from ISRO's launch vehicles. अब SS2 मोटर को इंटरस्टेज के साथ सुरक्षित कर लॉन्च पैड लाया जा रहा है। तत्पश्चात इसे प्रथम चरण SS1 के ऊपर एकीकृत कर दिया जाता है। The third stage, again with a carbon fiber motor case being integrated. Now it's being moved to the launch pad for assembly to the launch vehicle. जी हाँ, यह तृतीय चरण, यह भी ठोस नोदक पर आधारित चरण है। अब इसे भी लॉन्च पैड लाया गया और SS2 के ऊपर में संयोजित कर दिया गया है। The encapsulated assembly and the satellites being made ready in the preparation facility. अभी आप देख रहे हैं EOS-7 उपग्रह, यह है आजादी सेट। इन सबको ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है। इसे हम एनकैप्सुलेटेड असेंबली बोलते हैं। पूर्ण संयोजित होने के बाद इसे डायरेक्टर SDSC शार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। After getting integrated in the clean room, the encapsulated assembly is being hoisted and integrated to the launch vehicle. Minus The launch 23 campaign minutes. had begun on Sunday, the 5th of February, and today we are ready for the launch. पूर्ण संयोजित SSLV-D2 प्रमोचक यान तैयार है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। The second developmental SSLV, standing on the launch pad, awaiting its turn to Roger. register itself in the annals of history. The countdown for this launch had begun 6.5 hours before the scheduled launch time. We are about 24 minutes from the launch. इस बीच आपको मिशन विवरण देते हैं। वैसे तो SSLV-D1 अपनी प्रथम उड़ान पर ही वायुगतिक क्षेत्र में सभी चरणों के संतोषजनक निष्पादन प्रदर्शित कर चुका है, फिर भी कुछ त्रुटियों को भी उजागर किया है। उन सब क्षेत्रों को सुदृढ़ होकर SSLV-D2 अंतरिक्ष यान पुनः अपने विकासशील मिशन के लिए तैयार है। इस यान में मुख्य उपग्रह EOS-7 जो कि 156 kg के भूप्रेक्षण उपग्रह है। इसे 450 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में 37.2 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित किया जाना है। इसके साथ यात्री उपग्रह के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जानस 1 जो कि 22.5 kg का अंटारेस USA द्वारा निर्मित एक लघु उपग्रह है। इसके साथ आजादी अमृत महोत्सव को दर्शाता आजादी सेट 2 स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित आजादी सेट 2 उपग्रह है। यह यान 370 kg के निधभार को 450 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करने की क्षमता का प्रदर्शन करने वाला है। यह मिशन कुल 900 सेकंड का होगा। Let me explain about the launch vehicle.
SSLV is a three-stage launch vehicle. The first stage, SS1, has 89.5 tons of HTPP-based propellant. The second stage, SS2, has 7.7 tons, and the third stage, SS3, has 4.5 tons of solid propellant. The velocity trimming module operating on Earth storable hyperbolic propellants to add orbit the velocity for the satellite to be injected into the correct orbit. Design drivers of SSLV are low cost, low turnaround time, flexibility in Minus accommodating 22 multiple minutes. satellites, launch on demand feasibility, and minimal launch infrastructure requirements. RSC confirms data from chain 2. जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, उड़ान की उल्टी गिनती करीब 6.5 घंटे पहले शुरू हो चुकी है। इस दौरान अंतरिक्ष यान को पावर ऑन कर उपग्रह सहित सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच प्रारंभ हो चुकी है। सभी संचार तंत्रों को सुनिश्चित किया जा रहा है। सुपर कैपेसिटर के आवेशन किया गया। एटीसी तथा मौसम विभाग की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अंतिम सुधारों के पश्चात रियल टाइम प्रोग्राम को ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया जाएगा और यान के ठोस बूस्टर का प्रज्वलन तंत्र को आम किया जाएगा। ऐसी सारी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं और Minus संतोषजनक 21 तरीके minutes. से पूर्ण की जा रही हैं। Request all stations change over to channel 2 at T minus 20 minutes. No confirmation is needed to control. अब हम कुछ ही देर में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी करने की प्रक्रिया देखेंगे। The launch will take place at an azimuth of 135 degrees from the first Char launch 1 and pad. 2. Char 1 and 2 confirms both telemetry carriers normal. TC Roger. Apart from the radars and telemetry and tracking station at Sriharikota, the stations at Bangalore, Trivandrum, Port Blair, Singapore, and Yataraga will track the flight trajectory and flight events. ROD Roger. RSO to ROD, range safety systems are ready for the launch of SSLV-D2 EOS-07. अब हम प्रमोशन से 20 मिनट की दूरी पर CNC to TTC Director. Minus 20 minutes. Network confirms readiness to support real-time launch of SSLV-D2. After integration of the launch vehicle, several checks have been carried out to Request verify all the health of the stations change over systems. to channel 2. The Launch Authorization Board gives a go-ahead conclusion subject to the satisfactory health of launch vehicle and various other ground-based Event systems 139, and weather. spacecraft ready and internal battery selection completed. This is Vehicle Director to Mission Director. All the system parameters of SSLV-D2 launch vehicle are normal and within specification. The launch vehicle is ready for SSLV-D2 EOS-07 mission. Mission Director Roger. Minus 19 minutes. Timing to control, timing confirms external hold mode. Roger. LCC1. Please note timing confirmed external hold mode. LCC noted. ROD to Mission Director. Range is ready for SSLV-D2 EOS-07 launch. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. All track stations and network is ready to support SSLV-D2 EOS-07 mission. Mission Director Roger. Satellite Director to Mission Director. EOS-07 satellite is ready for SSLV-D2 EOS-07 mission. Mission Director Roger. Vehicle Director, Minus 18 Range minutes. Director, TTC and Spacecraft Director has given. This is Mission Director. Mission Readiness Review Committee and Launch Authorization Board have already given required clearance for proceeding with the countdown and launch of SSLV-D2 EOS-07 mission. All operation in the countdown sequence up to automatic launch sequence have been completed
satisfactorily. Based on the clearance obtained from the launch vehicle, spacecraft, range and extract network station and prevailing favorable weather condition, Mission Director hereby authorized to initiate launch operation sequence for the launch of SSLV-D2 EOS-07 mission at 9:18 hours today, that's 10th February 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch. Minus 17 minutes. Based on the readiness of range, TTC, launch vehicle, and spacecraft, the automatic launch sequence begins a module of quick checks, culminating in the onboard computers initiating the ignition command for the first stage of the rocket, and the rocket will lift off. As you have seen, automatic launch sequence has been initiated. जी हाँ, ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है। इसके पश्चात ऑन बोर्ड कंप्यूटर प्री प्रोग्राम तरीके से सभी तंत्रों की जांच कर प्रज्वलन का कमांड देगा। अब हम प्रमोशन से 16 मिनट की दूरी पर Minus 16 minutes. Automatic launch sequence initiated for SSLV-D2 launch. SDS servers activated. MC confirms reception of SHA-1 and SHA-2 data. इस मिशन SSLV-D2 EOS-07 का मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। निम्न भूकक्षा में SSLV की अभिकल्पित निर्धार क्षमता का प्रदर्शन करना और EOS-07 उपग्रह तथा 2 सहयात्री उपग्रह जानुस 1 और आजादी सेट 2 को 450 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करना। SSLV लॉन्च व्हीकल एक लघु उपग्रह प्रमोचक यान है। इसकी क्षमता 10 से 500 केजी के नितभार को निचली कक्षा में स्थापित करने की है। इसमें बहुत सी मुख्य बातें हैं जो इसे अन्य प्रमोचक रॉकेटों से अलग बनाती हैं। यह लघु उपग्रहों को निचली कक्षा में स्थापित करने की सबसे कम लागत और क्रांतिक तकनीक का प्रयोग कर रहा है तथा इसका प्रदर्शन करने वाला है। इसे कम से कम समय में तथा कम लागत में तैयार किया जा सकता है, ऐसा इसे बनाया गया है। The SSLV design has emphasized integration and test simplicity. It is an effective solution for those payloads that were hitherto launched as secondary payloads on medium launch vehicles. Small satellites have to ride share with bigger satellites or wait for a large enough group of small satellites going to a similar orbit. This results in small satellites being placed in suboptimal orbits or waiting for launch schedules to align with larger launches, resulting in launch waiting times. The SSLV is an effective solution for such payloads. भू स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस निरंतर लॉन्च व्हीकल पर नजर बनाए रखते हैं। इसमें शार, बैंगलोर, त्रिवेंद्रम, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर तथा यत्रगा स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस की मदद ली जा रही है। अब आपके सामने एक कट एंड रेजर वीडियो है। The Small Satellite Launch Vehicle, SSLV, is the latest launch vehicle designed and developed by ISRO to deliver single or multiple nano,
micro and mini satellites up to 500 kilograms into 500 kilometer planar orbit. SSLV is a three-stage launch vehicle with all solid propulsion stages, and satellite insertion into the orbit is achieved through a liquid propulsion-based velocity trimming module. SSLV is 2 meters in diameter and a height of 34 meters with liftoff weight of around 120 tons. SSLV being the younger sibling of the legendary PSLV, GSLV and LVM-3 has inherited best of the qualities of these three. However, it also offers certain new technology elements considering the functional requirements of its job. Two new solid motors, SS1 and SS3, are now added to ISRO's fleet of solid motors. SS1 motor is the third largest solid booster of ISRO, while SS3 motor is a new composite upper stage solid motor. SSLV vehicle is designed as a ready-to-transfer vehicle with standard interfaces for end-to-end industrial production. This flight of SSLV-D2 shall demonstrate the design payload capability of the vehicle in low Earth orbit as well as multi-orbit launching capability through restart of velocity trimming module. SSLV provides low-cost access to space with a flexibility in accommodating multiple satellites. It also offers low turnaround time, launch-on-demand feasibility, minimal launch infrastructure requirements. Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) is deemed as the next workhorse rocket from ISRO, and it is expected to play a major role in the commercial small satellite launch services. अभी अभी आपने SSLV D2 का कर्टन रेजर वीडियो देखा। आपको प्रमोचक रॉकेट SSLV D2 के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। SS1 minus 10 minutes. यह प्रमोचक रॉकेट SSLV का प्रथम चरण है। वैसे तो SSLV त्रिचरणीय यान है। उसका प्रथम चरण SS1 है और इसके तीनों चरण SSLV के तीनों चरण ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं। प्रथम चरण SS1 87 टन के ठोस नोदक से बना हुआ है। इसका व्यास 2 मीटर तथा ऊंचाई 22.5 मीटर की है। यह चरण 3 खंडों में बना हुआ है और कुल 2600 किलो न्यूटन का निर्वात प्रणोद उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। द्वितीय चरण को SS2 कहा जाता है। यह भी ठोस नोदक पर आधारित चरण है जो कि PSLV के HPS3 चरण का व्युत्पन्न चरण है। SS2 और SS3 क्रमशः 7.7 तथा 4.5 टन के ठोस नोदक वाले चरण हैं। SS2 और SS3 के बाद ऊपर की ओर पेलोड फेयरिंग और पेलोड फेयरिंग के अंदर मल्टी पेलोड अडेप्टर है जहां उपग्रहों को रॉकेट के साथ संयोजित किया जाता है। इस यान का एक मुख्य तंत्र VTM है जो कि वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल कहलाता है, जो उपग्रहों को अंतःक्षेपण से पहले निश्चित गति तथा अभिवृत्ति प्रदान करेगा। इस तरह SSLV की कुल उत्थापन भार करीब 120 टन की होती है। Let me now appraise the viewers about the flight events for SSLV-D2 EOS-07 minus mission. 8 minutes. At T0, the first stage SS1 ignites and the launch vehicle lifts off. The nominal action time of SS1 is 115 seconds.
The second stage, SS2, ignites at 123.7 seconds into the flight. And the first stage separates from the ongoing launch vehicle 400 milliseconds later. This is called hot separation, wherein an upper stage ignites before the separation of a lower stage. In the meantime, the rocket would have crossed 100 kilometers altitude and closed loop guidance is initiated at 131 seconds into the flight. The payload fairing separates at an altitude of 149 kilometers at 158 seconds into the flight. The second stage burns out after an action time of 124 seconds, having carried the rocket to 281 kilometers altitude and 341 kilometers downrange. After a coasting of 138 seconds, the second stage also separates. The third stage ignites 10 seconds later and operates for 104 seconds. Maximum relative velocity gain takes place during the regime of SS3. The relative velocity changes from 3.3 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. After the burnout of SS3, the coasting lasts for 177 seconds. The payload is more or less in the orbital altitude by now. External power withdrawn. The velocity trimming module fires nominally for 7 seconds and imparts the velocity and attitude for the injection of satellites. Flight coefficient loading started. The prime satellite EOS-07 is injected at an altitude of 450.7 kilometers after a flight duration of 13 minutes from the launch. 95 seconds later, Janus 1 separation takes place. 20 seconds thereafter, Azadisat 2 separates. We are about 5 minutes from the launch. minus 5 minutes. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सुचारू रूप से जारी है। अब हम 5 मिनट की दूरी पर हैं प्रमोचन से। She confirms data from all radars. इस प्रमोचक यान में कई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें बूस्टर सेगमेंट्स को ड्राई जॉइंट की मदद से एकीकृत किया गया है। पायरो सर्किट्स को और सरल बनाया गया है। सेपरेशन सिस्टम को मॉड्यूलर बनाया गया है ताकि इसका उत्पादन सरल तथा कम समय में किया जा सके। अनेक उपग्रहों के समावेश के लिए मल्टी पेलोड एडेप्टर लगे हुए हैं। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक के साथ मैम सेंसर का उपयोग नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल के लिए किया जा रहा है। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग कर दिशा नियंत्रण तथा संशोधन तंत्र लगाए गए हैं। इसमें पायरो इग्निशन के लिए सुपर कैपेसिटर का भी प्रयोग किया जा रहा है। Pyro and wall battery on. The weather is fine and we are expecting the launch 3 minutes 30 seconds from now. Onboard computer in flight mode. minus 3 minutes.
You're watching the visuals from the launch pad. SSLV D1 D2 सुसज्ज है प्रथम प्रमोचन मंच पे अपने प्रमोचन के लिए। मौसम पूरी तरह अनुकूल, वायु गति भी पूरी तरह अनुकूल है प्रमोचन के लिए। -2 minutes. ATC तथा मौसम विभाग से अनुमति ली जा चुकी है प्रमोचन के लिए। अब हम उड़ान से 1.5 मिनट की दूरी पर सर्वप्रथम SS1 स्टेज का इग्निशन होगा। About 1 minute remaining. -1 minute. Distract start sound. -55 seconds. -50 seconds. All sequences sound. -45 seconds. -40 seconds. -35 seconds. -30 seconds. Time programs activated. -25 seconds. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV-D2 EOS-07 on a bright sunny morning. Event tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D2 प्रमोचक यान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV D2 EOS-07 मिशन। We have confirmation from the Range Operations Director of the normal performance of Stage 1, which means close to 2,600 kilonewtons thrust. 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds. भारत के आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाता भारत का एक और महत्वपूर्ण मिशन दिन के उजाले में दूर तक दिखाई दे रहा है। बहुत से दर्शक आंखों देखा अनुभव लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। सभी की धड़कनें तेज। Shato is in main auto. +1 minute. Apart from the launch-based radars, telemetry and tracking stations at Shar, Bangalore, Trivandrum are currently tracking. जैसे जैसे यान ऊपर जा रहा है, हम देख रहे हैं इसके सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं और यान निर्धारित दिशा की ओर अपने आप को निरंतरित करता हुआ आगे जा रहा है। The flex nozzle of stage is imparting the pitch and yaw control functions, whereas the roll control is by fin tip control. यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ। On your TV screens, the simulation of the flight. The separation of SS1 will follow the ignition of second stage. कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो, प्रथम चरण को पृथक कर दिया जाएगा। Second stage ignited. First stage separated.
SS2C separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। The second stage of the rocket has commenced its operation and the first stage has been Stage separated. performance normal. Burn time for SS2 is 124 seconds. This rocket stage with Payload carbon well fiber motor separated. case contains 7.7 tons of HTPB based solid propellant. ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब हम प्रमोचन से 177 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। अभी ऊंचाई 182 किलोमीटर है तथा सापेक्ष गति 2.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। The closed loop initiated and the payload fairing has Normal. SS2 चरण का प्रज्वलन पूर्ण होने के पश्चात 140 सेकंड का कोस्ट फेज शुरू होगा। इस कोस्ट फेज में बिना किसी प्रज्वलन के प्राप्त संवेग से यान 423 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगा। Shar, Bangalore continue to track. Trivandrum and Port Blair stations have started to acquire द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो गया है तथा कोस्ट फेज जारी है। Vehicle is in combined hosting and performance is normal. of 100 seconds. The SS2 will separate 200 seconds after it SS2 altitude meters per second city. वर्तमान में शार, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम तथा पोर्ट ब्लेयर स्थित भू ट्रैकिंग स्टेशंस यान कर ट्रैकिंग कर हम तक आंकड़े उपलब्ध करा ऐसे नेतभारों का प्रयोग कर रहा है जो कि माइक्रो सैटेलाइट बस से सुसंगत और भावी उपग्रहों के लिए उपयोगी नवीन तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें मिलीमीटर वेव ह्यूमिडिटी साउंडर तथा स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग जैसे पेलोड लगे हुए हैं। EOS-07 का कुल भार 156 kg है तथा इसका कार्यकाल 1 साल का निर्धारित किया गया है। कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। Stage separated. The third stage SS3 Stage ignited. has commenced its operation. जी हाँ, तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह भी करीब 104 सेकंड तक चलकर शांत हो जाएगा। उसके बाद कोस्ट फेज की शुरुआत होगी। तृतीय चरण का प्रज्वलन सामान्य। HTPB based solid propellant with a loading of 4.5 tons produces a vacuum thrust of 160 kilonewtons. The stage burns for 104 seconds.
The Is- current altitude is 449 kilometers. इस चरण के अंत तक हम 450 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.24 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुके होंगे। plus 8 minutes. वर्तमान में हम 480 सेकंड आगे आ चुके हैं प्रमोशन से। यान की ऊंचाई 453 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। Third stage action completed. तृतीय चरण का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है तथा कोस्ट फेज जारी है। Presently, the third stage has completed its operation Vehicle performance normal. but has not yet been separated. It is a coast phase along with the spent stage mass, velocity trimming module, and the satellites. The Plus duration 9 of minutes. coast phase is designed according to the mission requirements, considering the altitude to be reached and velocity to be attained at the time of injection. In the meantime, let me tell you about the satellites taking a ride in this mission. The primary satellite for this mission, EOS-07, is a microsatellite weighing 156 kgs, accommodating new technology payloads, millimeter wave humidity sounder, and spectrum monitoring payload. These new technologies, when proven, will be implemented in future operational satellites. The co-passenger satellite Janus-1 from USA is a technology demonstrator smart satellite mission based on Antares software platform. Janus-1 demonstrates modular bus and multi-tenant payloads with onboard edge computing programmable smart EPS, SX band SDR, Vehicle performance normal. secure TNC, and digital twinning with SaaS platform. Azadi Sat-2 is a satellite made by SpaceX radio communications, measure radiation levels in space, and demonstrate expandable satellite structure. अभी यान का कोस्ट फेज जारी है। यान पूरी तरीके से निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। इस यान में आजादी सेट एक क्यूब सेट है जिसका भार 8 केजी है। इसे 75 फेम्टो एक्सपेरिमेंट्स के लिए विभिन्न नितभार हैं। plus 11 इन minutes. नितभारों को स्पेस किड्स इंडिया द्वारा एकीकृत किया गया है। इसमें UHF, VHF फ्रीक्वेंसी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं जो कि ध्वनि तथा डेटा दोनों के प्रेषण में सक्षम